अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी अ ब्रीफ मूवी। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। They are the Samvedi police, trained impeccably in mind and body, combining values with a sense of purpose towards the people and society. Tough, yet human. Fearless, yet compassionate. Physically fit, yet never forgetting the ethical code. Competent, smart, courageous, sensitized. They are the IPS officers. The Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy stands as the central institution of the Indian Police Service. Our forefathers, our leaders, conceived of this idea of the Indian Police Service as a service which would unify the country and would impose and would implement a common legal procedure and laws all over the country. The Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy is the first institution of its kind in India. It has no precedents to look back upon, but has an inspiring example to set for the future generations. It has to build itself and build others. The vision of the Academy is to build a cadre of exemplary police officers who will uphold the rule of law, respect national values of secularism, democracy, equality and service to the people, and ensure the dignity and rights of the citizen with sensitivity. Young men and women enter the National Police Academy portals with their own apprehensions, but fired with a common passion, trained to be the best of the best. Here is their story. Our mandate is to go beyond training, to transform probationers as sensitized police officers for an empowered society. The National Police Academy strives to produce police officers who symbolize the dictum mens sana in corpore sano, that is, a sound mind in a sound body. The rigor of the outdoor is matched by the rigor of the indoor. Actually, the how becomes easy when the why is clear. In the academy, we don't only teach our trainees the way to do things right, but we also teach them to do the right things. The emphasis on skills is as important as emphasis on values and attitude. It's much like taking a lump of clay
and molding beautiful shapes that wows the world. ट्रेनिंग होती है प्रॉपर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए. The journey is a holistic one. Mind, body, and a methodical deconstruction. The Academy follows an integrated training philosophy model which strives to conduct training towards building sensitization, orientation, and competency of a probationer. Sensitization towards the issues of the underprivileged sections of the society, orientation to the service of the people, and professional competency to meet the needs and expectations of the people. The first thing that caught my imagination at NPA was the term officer-like qualities. And since then, NPA has made us to think, what kind of officers do we want to be? That the training has sort of induced me to think beyond narrow confines of self or me, and it's given me a more vantage perspective of being able to think about larger issues, about society, about the problems that it faces, and your own role and how you sort of fit in solving the problems. And that thinking has brought in with itself a lot of varied experiences. We met transgenders, we met social workers, we met community leaders, we met sex workers, and with them came varied experiences. And those varied experiences helped us shape our opinion of society, how society is changing, and how we need to adapt to the change that is coming out. The journey from colonial policing to democratic policing is complete only when the future leaders of police are sensitized to the dictum, police or public and public or police. We also orient them that you are one amongst them, and this has to be borne in the mind while dealing with any public order scenarios. ये तो मुझे वो लग रहा है. Whatever the provocation, I would appeal to you to remain cool. It is the primary duty of the police. He who loses his temper no longer remains a policeman. Our law and order simulation exercises imbibes in the minds of the probationers that while handling any kinds of demonstrations, dharnas and agitations, one has to follow the principles of utmost restraint, negotiations, warnings and non-lethal protocols. Academy imbibes the spirit of his sayings in law and order simulations. When the situation compels to use force to disperse any unlawful assembly, it's always better to assess whether to use force or not, how much to use, when to use, and to what extent to be used. This will always help in dispersing a mob or an unlawful assembly peacefully. After that, I came back to the police section and I sent one essay. कोर्ट में कैसे? Probationers are trained to produce irrefutable scientific evidence beyond any doubt for the courts to deliver justice. Rule of law, constitutional values, and respect for human rights are fundamental principles on which we teach laws. The role of police in criminal justice system is taught to our trainees by organizing debates on legal issues, mock trials, crime scene simulations, and moot courts. Rather than teaching all the indoor and outdoor subjects independently,
Integrated police training is a scientific model adapted by integrating the subjects so as to make the probationer understand the interconnectivity between them. It simply integrates the content, its context, and the application. The supervision of the working of a police station is an important responsibility of an IPS officer. In the model police station, the probationers are given hands-on training on various aspects of police functioning, like registration of FIR, investigation, service of summons and warrants, beat duties, and counseling. The probationers assume various roles, right from a sentry to a station house officer. The perpetrator of a crime will bring something into the scene of crime and will leave with something from it. We train our probationers by creating crime scenes and help them to identify, pick, pack, seal, and forward the evidence through which they can either link the criminal or the suspect to the crime or exonerate the innocent. This would mean, however clever the criminal may be, he or she would definitely leave some trace of evidence of their presence at the scene of crime. It is for you to be focused and collected. देखो मतलब tough training यार वही मैं देख रहा हूँ. There will be a lot of ways in which the criminal tries to hide the data. Today's crime is no longer simple. Tracking down cybercrime and cyber terrorism poses a great challenge to the law enforcement officers. IT wing of the academy makes sure that probationers learn the cyber tools necessary to investigate cyber crimes, to be prepared, to defend against them, and to bring the perpetrators to justice. The vision of smart police, where T stands for the technologically trained police, is the need of the hour. With this in mind, cyber forensics needs to be percolated down the police force so that every police officer can tackle cybercrime effectively. Probationers are acquainted with basics of fieldcraft and tactics on urban operations, improvised explosive devices and jungle operations to handle crisis as first responders. Any disaster, whether it is natural disaster or a man-made disaster, the role of the first responders is very crucial immediately after the incident takes place. The Special Tactics Wing was created in the National Police Academy to cater to the tactical training needs of various states and CAPFs in handling LWE, counterinsurgency and counterterrorism capabilities. सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है. Jungles do not tolerate frailty of either body or mind. You show your weakness, it would consume you without hesitation. When it is coupled with enemy, it becomes further dangerous. The cardinal element of jungle warfare is maintaining an element of surprise and silence.
active learners and not the passive listeners is what we are trying to achieve while designing and delivering our indoor classes here at NPA. We primarily do this by keeping 5 factors in mind. Number 1, generating interest in the topic. Number 2, involving the probationers in the process of learning. Number 3, interaction through faculty and peer-led discussion. Number 4, ongoing evaluation. And number 5, continuous feedback that helps us to achieve active learning. Physical fitness, endurance, stamina are required to work for long hours and in difficult terrains. These are inculcated in future police leaders through outdoor activities like physical training, cross-country running, rock climbing, long distance route marches. मुझे बहुत पसंद है, ये नहीं पसंद, बंजी जंपिंग भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी अच्छी लगती है, बट मुझे आती नहीं। काफी ज़्यादा हाँ, मुझे ये बहुत डिफिकल्ट लगती है। ये मुझे ये करना पसंद है, ये राफ्टिंग। अच्छा। और फ्लिप जंपिंग भी बहुत पसंद है। The IPS officers need to work round the clock throughout their careers. Therefore, we focus our training on developing and nurturing the necessary emotional intelligence in our probationers so that they are equipped with the necessary fortitude to deal with tough and challenging situations. In pursuit of strengthening the bilateral relations with friendly neighborhood, National Police Academy trains officers of Nepal, Bhutan and Maldives. After my training here, I have found out that this training, it encompasses all the activities, all the roles that a police have to do, not only physically but mentally and emotionally as well. Looking at the bandobast plan, looking at how you deal with riot control, every kind of situations, I feel now more confident that I'll be able to deal with such situations. And even the laws, the principles here are very in-depth, and which has allowed me to understand the laws of my country much better. It's been a great opportunity to be trained along with the IPS probationers here for 10 long months. As we know, Nepal and India shares a long porous border, and the crimes prevention in the borders, trans-border crimes, and its investigation has been really a challenge for both the countries. I think the bond between the IPS probationers and now IPS officers and the officers from Nepal Police will help for the prevention, detection and investigation of the border crimes. This training from the National Police Academy will strengthen the bond between Maldives Police Service and the Indian Police Service and help us in combating modern day terrorism and cross-border crimes. The strength of an institution lies in its ability to change and adapt itself in tune with the changing times. This institution evolved simultaneously with the evolution of the service to which it caters. Authoritative policing to rights-based policing. Colonial policing to democratic policing. Today, Samvedi Police, Sashakt Samaj has been adopted as the watchword by the Academy to define the training philosophy. The director and members of the faculty endeavor chiseling out sensitized police officers to serve an empowered society. As a part of career development for IPS officers, NPA conducts mandatory mid-career training programs for attaining next level of competency. Phase 3 is for SP rank officers having at least 9 years of experience with a theme of honing up the leadership skills. Phase 4 is for DIG and IG rank officers having at least 14 to 16 years of experience with the theme of innovation and strategy. Phase 5 is for
IGP or ADG rank officers having a 24 years of experience with the theme of change management and leadership. The National Police Academy stands today as a symbol of Sardar Vallabhbhai Patel's dream of an Indian police service which is the steel framework of the country, unifying and protecting the country from external and internal threats. सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा लोहे जैसी हिम्मत है, लोहे सा जज्बा अपना, आंखों में लिए चलते हैं हम लौह पुरुष का सपना. The IPS has been a great unifying factor of the country, and there are several officers who have unhesitatingly made the supreme sacrifice and laid down their lives in the course of performing their duty. हम चलते हाथ लिए अमन प्रेम की रोशनी, देश ही दिल देश ही जान, इस देश के ही हैं हम. What are the things one looks for in a dream job? It should be challenging, so that there are avenues of personal growth, meaningful, so that it gives purpose to your life, and rewarding for all the hard work you put into it. And believe me, there's no better reward than what you see in the eyes of people you serve, the sense of gratitude and happiness they have. If this is your idea of work, then IPS is the dream job for you. ये देश मेरा मैं देश का, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी. ये देश मेरा मैं देश का. I take immense pride in my uniform, and I proudly stand today passing out of this prestigious institution as an IPS officer, having firm belief in myself that one day I will make my uniform take pride in me. हर दिशा से चुनकर आए, कुछ ऐसा हम कर जाएं, व्यक्तित्व तराशे ऐसा जो मुल्क के काम आ जाए. एकेडमी हम प्रोबेशनर्स को सिर्फ ज्ञान, कौशल, दक्षता ही नहीं देती, बल्कि इसके साथ साथ वह सोच और वह नजरिया भी देती है जो कब हमें ऐसे संवेदनशील पुलिस ऑफिसर्स में बदल देती है जो जनता को पुलिस से और पुलिस को जनता से जोड़कर एक बेहतर समाज बना सके. नेतृत्व की अमर कहानी हर सांस में हम दोहराए, मेहनत कर हिम्मत से हम देश की आन बचाए. Sisters, take this opportunity to transform yourselves from potential victims to protectors. Let us start taking responsibility of our lives and of those around us. Because if not us, then who? If not now, then when? सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी. ये देश मेरा मैं देश का. सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी. ये देश मेरा मैं देश का. We are the Indian Police Service. Join the IPS. Join the IPS. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. मेरा मैं देश का. भाई इससे पहले जो है हमने देखा था कि जो आईएएस जो लुबासना है वहाँ पर किस तरह ट्रेनिंग होती है. वैसे इस चीज़ में कोई शक नहीं कि भाई यूपीएससी क्रैक करके भी आपकी जो है जिम्मेदारियाँ कम नहीं होती, आपकी मुश्किलात कम नहीं होती, बल्कि आपको कई तरह के सफ़र तय करने पड़ते हैं. मुझे इंडियन जो भी अकेडमीज हम लोगों ने देखी हैं, चाहे वो लबासना देखें या आज हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी देखी है, दोनों में एक चीज बहुत अच्छी लगी है कि मेरिट रखा गया है और डिफरेंट फेजेस रखे गए हैं जिसमें जो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको हम कहेंगे कि लाइक उस टेस्ट को
क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद उनको एक पोजीशन मिलती है। यानी कि वो कहते हैं ना कि पहले अच्छे से पॉलिश किया जाता है, फिर उसके बाद उनको वो पोजीशन जो है वो दी जाती है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि पुलिस को लेकर स्पेशली कि इतनी टफ ट्रेनिंग होती है या इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उनके साथ भी जो है वो की जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों का एक सोच होती है कि हमें डर लगता है पुलिस से, ठीक है ना, उनसे इंटरेक्ट करते हुए कि हमें पुलिस के वो मसले यार असल में जो एक आम बंदा होता है ना, उसे कानून का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता, तो पता ही नहीं होता कि भाई चीज़ों को किस तरह डील करना है, क्या करना है। तो बेसिकली पुलिस के पास जाते हुए लोग सीधी सी बात है काफी ज्यादा वो हेजिटेशन फील करते हैं। हेजिटेशन होती इस वजह से होती है क्योंकि देखो अगर आपको आगे से बहुत कोऑपरेटिव लोग मिलते हैं ना, हाँ। या ये डिपार्टमेंट अगर आपको बहुत कोऑपरेटिव लगता है तो फिर आप बात करते हुए जाते हुए अपनी प्रॉब्लम बताते हुए टेंशन में नहीं आते कि मतलब मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने वैसे पाकिस्तान में तो ऐसे ही देखा लोगों की एक सोच कि भाई पुलिस के चक्रों से दूर ही रहते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्रों से दूर रहते हैं, क्योंकि वहां से उस तरह का एक आपको हम कहेंगे कि आपके साथ वैसे कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता इस वजह से। बिल्कुल वही मैं बात आपसे एग्री कर रहा हूँ कि बेसिकली आपका लॉ की इतनी जब नॉलेज नहीं होती तो चीज़ों को जो है ना वो आप उस तरह हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन जो है अभी जो ट्रेनिंग देख रहे थे तो नो डाउट उसमें जो है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है, डिफरेंट सिनेरियोज बताकर उनकी गुत्थी सुलझाएं कि भाई क्या है क्या नहीं है, छोटे छोटे एविडेंस कलेक्ट करें। तो अगर देखा जाए तो भाई पुलिस वालों की ज़िंदगी जो होते हैं, जो अच्छे पुलिस वाले होते हैं, ज़िंदगी भाई आसान नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ती है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है कई चीज़ों में। तो ये चीज़ जो है ना जो सिखाई जाती है कि चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, प्रेशर किस तरह जो हैंडल करना है, जो ब्रेन ट्रेनिंग बेसिकली होती है जो प्रेशर हैंडल करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसे बीच में दिखाया गया कि लोगों के साथ मिलना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ मिलना और उनकी प्रॉब्लम्स और जो चेंजेस सोसाइटी में आई हैं उनको मतलब उसी तरीके से अडॉप्ट करना कि हाँ इसका अब ये प्रॉब्लम है। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप जब ऐसे करते हो ना तो आपको जब लोगों के अंदर जाते हो, लोगों के साथ घुलते मिलते हो, तो लोगों की प्रॉब्लम्स आपको और अच्छे तरीके से समझ आती हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। और उसके अलावा जैसे मौसम ने बोला कि डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं वाकई में वो बनाना, एक मॉडल पुलिस स्टेशन बनाकर एक ऐसी सिचुएशन बनाना क्राइम की, या फिर इस तरह से ये एक तरह के टेस्ट होते हैं कि आप किस तरह से उस केस को सॉल्व करते हो। फिर उसके बाद आप जो एक कोर्ट का पूरा एक मतलब हाँ प्रोसीजर है कि किस तरीके से आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं, कोर्ट में किस तरीके से आपने जज साहब के सामने जाकर तो बात करनी है, वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग देना। तो मुझे सीरियसली अभी भी कभी मैंने सोचा नहीं था, अभी भी ऐसा लग रहा है कि वाकई में इतनी टफ ट्रेनिंग होती है। और इस लेवल पर अगर आप पुलिस ऑफिसर्स मैं कहती हूँ कि तैयार करते हो ना तो फिर वाकई में पुलिस का डिपार्टमेंट बहुत एफिशिएंट हो जाता है। यार अभी जो है ना जो वीडियो में हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें हैं। अभी ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि जब कहीं पे प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर जो है चीज़ों को हैंडल करना जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो नो डाउट मुश्किलात आती हैं। लेकिन जो है पुलिस वालों का अपने आप ठंडे दिमाग रखना, अपने आप को कूल डाउन रखना, चीज़ों को लोगों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। नो डाउट पुलिस वाले कुछ एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं, लेकिन जो है फिर भी इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करने के बीच में भी एक छोटा सा सीन भी क्रिएट किया हुआ था उन्होंने, जिसमें इस तरह दिखाया हुआ कि लोग, मुझे पता क्या लगा था, मुझे लगा शायद क्राइम पेट्रोल का सीन है, लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज किया ऐसा नहीं है। तो वो ये चीज़ें जो है ना वाकई पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल होती है क्योंकि होते वो भी इंसान ही है। लेकिन फिर कॉर्पोरेशन यहाँ पर जो है चाहिए होता है। पुलिस वाले यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सारे ही एक जैसे होते हैं, बाकी इस तरह भी है कि भाई कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपकी बात बहुत सब्र तहम्मुल से सुनते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल भी निकालते हैं। बाकी अभी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी वो भी जो है जो ऑफिसर्स वहाँ पर जाते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें हेल्प करती हैं। अच्छा वैसे मैं ये सोच रही थी कि जो एक्टिविटीज जितनी भी बीच में दिखाई गई हैं वो सबको करनी पड़ती होंगी या फिर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब करते होंगे? मेरा ख्याल है कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो सारे करते हैं, क्योंकि जब हमने लबासना वाली देखी थी तो उसमें सारे इसी तरह थे कि अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने इंटरेस्ट की चीज़ें करते थे। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि महिलाओं को मैंने देखा बीच में बहुत ज़्यादा महिलाएं थी जो कि मतलब आपको IPS ऑफिसर हाँ देखने को मिली, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है।
क्योंकि मुझे लगता है कि ना औरतों का इस तरीके से आगे आना कहीं ना कहीं पर वो बाकी सारी औरतों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं कि भाई आप घर के जो मामलात हैं और जो अपनी ड्यूटी के मामलात हैं वो सब मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल में वो एक रोल मॉडल बन जाती है। यार ये तो अभी हम देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे हैं तो आपको पता चला, तो अगर हमने कई सारी ऐसी वेब सीरीज देखी हैं जिसमें आईपीएस महिलाएं दिखाई हैं, यानी कि रियल बेस्ड वो बनी हुई हैं, तो उसमें जो डिप्टी कमिश्नर हैं या जो नए लोग आ रहे हैं उसमें महिलाएं काफी ज्यादा दिखाई हुई हैं। तो बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया में अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा देर से ये चीज है कि वहां पे औरतों को काफी ज्यादा जो है वो एक राइट्स मिलते हैं। तो हम लोगों ने लोकोमोटिव की ड्राइवर भी देखी हुई है, बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये कि जब आप रियल लाइफ में देखते हो ना तो आप उस तरीके से इंस्पायर नहीं होते जितना आप रियल लाइफ में देखकर किसी भी डिपार्टमेंट को देखकर इंस्पायर होते हो, कि जहाँ पर खवातीन जो है वो हर काम कदम से कदम मिलाकर कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि वाकई में ये अवेयरनेस लोगों में इतनी होनी चाहिए कि लोग जो हैं मतलब वो कोई ऐसा प्रोफेशन डिसाइड नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लड़कियां नहीं जा सकती या यहाँ पर लड़के नहीं जा सकते या यहाँ पर लड़कियां जो है वो कंफर्टेबल नहीं होंगी। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इसमें कि काफी ज्यादा महिलाएं हम लोगों को देखने को मिली, सिर्फ एक दो नहीं हम लोगों को देखने को मिली। फिर उसके अलावा देखो जो हेड कर रही है वो खुद भी एक महिला है, वो सबसे ज्यादा खुशी की बात है। फिर जी उसके बाद हम आते हैं जो लास्ट वाला जहां पर बताया गया कि आपको अगर अपने रैंक ऊपर करने हैं तो उसके साथ साथ अभी एक्सपीरियंस कितना ज्यादा होना चाहिए, और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम, जो चीजें हैं, टास्क जो है वो सब कुछ मिलकर डिसाइड करता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में सिर्फ एक टेस्ट क्लियर करना जो है वो एक मतलब उस जर्नी का एंड नहीं होता, बल्कि वहां से एक और जर्नी शुरू हो जाती है जो कि मुझे लगता है कि मजीद डिफिकल्ट होती है और मजीद जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एनीवे ओवरऑल बहुत मजा आया देखकर। आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस को इस एकेडमी के बारे में पता था। हमारे लिए तो ये बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर जो है वो आईएएस ऑफिसर्स के बारे में देखा, जाना, सुना, और यूपीएससी की वजह से बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी हम लोगों को ऐसी ही वीडियो सजेस्ट करते रहते थे, और ये वीडियो हमें सजेस्ट की, थैंक यू सो मच, क्योंकि एक नई हम कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली। सो गाइस इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियोस को चैनल में वीडियोस का एंड पसंद प्रेयर्स। गुड बाय।